difference between Maoist and Naxalites. Let's see. Okay, see, Maoists work within agenda and use weapons to achieve their aims. In previous video, I have already told you Maoism is a form of communism. Fine, they want to usurp power from the government. Okay, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, and for this they use armed. They can have an armed struggle. Then they use mass mobilization of people as well. Now, Naxalism focuses on mass organizations while the Maoism relies mainly on arms. नक्सलिज्म में क्या होता है ना कि मेनली ये लोग मास मोबिलाइजेशन पे बिलीव करते हैं, ठीक है, कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए. बट माओइज्म में ना मेनली जो फोकस रखा जाता है वो यूज़ ऑफ वायलेंस पे रखा जाता है, आर्म्स यूज़ पे रखा जाता है. नाउ सी, Naxalism we have already discussed, but one can just revise it that Naxalism originated as a rebellion against marginalization of the poor forest dwellers and gradually against the lack of development and poverty at the local level in rural areas of eastern India. So it started as a rebellion. I told you in the Naxalbari village, okay, but it started as a rebellion because the poor forest dwellers and the tribals, they were actually exploited. They were marginalized. The land was snatched away, okay, because of the government acts and all, and which eventually formed a rebellion against the lack of development and poverty in these areas. So it began in 1967 with an armed peasant uprising in Naxalbari village of Darjeeling district in West Bengal. The term Naxal came from the name of the village. Okay, now the origin of the Naxals was a result of the split that took place in the Communist Party of India in 1967. It led to the formation of a Communist Party of India, Marxist and Leninist. Fine. Now, West Bengal became the center of the movement initially because obviously Naxalbari village is there in West Bengal. Then Naxalism spread to the lesser developed areas like Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and Andhra. Now, the CPI-ML party, which was formed after this split in the CPI party, has been fighting elections in several states across India. Most prominent among these groups are CPI, ML Liberation, then कानू, then जन शक्ति. ये लोग इलेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई. एक्चुअली हुआ ये कि ये पार्टी तो आ गई अपना इसमें पॉलिटिकल एक आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म पे आ गए, इलेक्शंस लड़ने शुरू कर दिए. बट जो लोग रह गए, ठीक है, उन्होंने वही चीज़ जो अपनी थी उनकी आर्म्ड फोर्स की और जिस तरीके से वो लोग रिबेलियन करते थे उस चीज़ को कंटिन्यू रखा. नाउ मूविंग ऑन, तो ये हमने पूरा थोड़ा सा समझा कि नक्सलिज्म में क्या था, ठीक है. अगर हम माओइज्म की बात करते हैं, माओइज्म ओरिजिनेटेड इन चाइना. पहली चीज़ तो दोनों के ओरिजिन में फ़र्क है. नक्सलिज्म इंडिया में ओरिजिन हुआ है, इंडिया के वेस्ट बंगाल में. फाइन, बट माओइज्म जो है ये चाइना में ओरिजिन हुआ है एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिस्ट थ्योरी डिराइव्ड फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल लीडर माओ जेडोंग, ठीक है. Maoists were the loyal believers of the chairman Maoist philosophy that power flows from the barrel of the gun. अब ये जो माओइस्ट थे ये हमेशा इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ठीक है. व्हेन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच वॉज CPI-ML was born out of the Naxalbari uprising, a section of communist rebels retained a distinct identity. Along with Marxism and Leninism, a new concept which is of Maoism started emerging in India. So when CPI, fine, it split, ठीक है. तो एक तो CPI-ML बनती है जो इलेक्शंस भी करती है, ठीक है, और ये सब नक्सलबारी अपराइजिंग से ही निकलते हैं, ठीक है. ना एक CPI-ML बनी और एक और सेक्शन रहा जिसने अपनी उस आइडेंटिटी को सेम रखने की कोशिश करी. एक नया कंसेप्ट निकल कर आया, नॉट सेम बट एक नया कंसेप्ट उन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश करी एंड दैट वाज माओइज्म. उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, ये लोग चले गए हैं इलेक्शन प्रोसेस में, हम अपनी माओइज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, ठीक है. नाउ अराउंड 1966 माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर वाज फॉर्म्ड इन वेस्ट बंगाल. Keeping a low profile in the early years, the group shot into prominence in Bihar in mid-1980s when they killed 54 Rajputs in Dalechak Bahagura village of Aurangabad. Fine. In other words, there are two fundamental differences. ठीक है.
दो अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन दो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, नक्सलाइट्स के बीच में और माओइस्ट के बीच में. While the Naxalites take part in elections and many of them are registered parties with the Election Commission of India, Maoists do not support the elections at all. ठीक है, there can be certain parties from among the Naxalites which are registered at the Election Commission of India. Okay, now also the Naxalites may have an armed wing. नक्सलाइट्स के पास भी एक आर्म्ड विंग हो सकता है, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द माओइस्ट डिपेंड ऑन देयर आर्म्ड मिलिशिया. दैट मीन्स कि माओइस्ट जो हैं उनके पास तो आर्म्ड विंग होगा ही होगा, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस ही उस पर, उनकी फिलोसफी ही उस पर है ना. दैट्स वाई. ओके, so what are the key points that we can derive from this discussion is Maoism originated in China, while Naxalism is derived from Naxalbari village of West Bengal. Terrorist does not belong to any movement or party. Naxalite is mostly in the Indian subcontinent and is a member of an armed revolutionary group advocating Maoist communism. Fine. Terrorism is use of violence and intimidation in the pursuit of political aims. Anyways, यहाँ पे एक डिफरेंस और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है नक्सलिज्म और टेररिज्म के बीच में, तो वो भी यही है. ठीक है. Naxalites believe in Maoism and practice terrorism. Therefore, the two terms, Naxalites and Maoist, should not be used interchangeably as they are not same and their ideologies have different roots. Why we cannot use interchangeably, although it's being used interchangeably nowadays, but फिर भी हमें थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि भाई बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों की एक्चुअली में आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है, दोनों के जो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें भी डिफरेंट है. वन नक्सलाइट्स दे कैन हैव आर्म्ड विंग, बट जो माओइस्ट होते हैं उनका तो पूरा का पूरा रूट ही आर्म्ड स्ट्रगल एंड इस पे बिलीव कर बना हुआ है. ठीक है. सो दीज आर द की पॉइंट्स. आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड थैंक यू.